अच्छा, पहले टॉपिक को लेते हैं हेरिडिटी एवोल्यूशन. ओके, क्लियर? अच्छा, हेरिडिटी एवोल्यूशन के टॉपिक तो पता है. हाँ, ओनली हेरिडिटी एवोल्यूशन तो अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन चैप्टर का ओनली हेरिडिटी हम लोग को पढ़ना है ना. और एक चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना. तो लाइफ प्रोसेस लास्ट टाइम क्या था, तो ठीक है, कोई जरूरत नहीं. फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो सब हो जाएंगे, तुम पढ़ाई की तरफ ध्यान. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ओके, कंट्रोल कोऑर्डिनेशंस में मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा, तो हम लोग उसका फिल इन द ब्लैंक्स में टाइप का है, उसको ब्लैंक को भरना है. ओके. In animals, nervous system is composed of nerve tissue which have specialized cell called. In animals, nervous system is comprised of specialized cells called. बोलो बोलो, ट्राई करो, ये तो लिख लो. न्यूरॉन. हाँ, न्यूरॉन. In animals, nervous system composed of specialized cells क्या है बेटा, न्यूरॉन्स. जैसे हम लोग स्कूल से आएगा फिर फिल इन द ब्लैंक्स भरने देंगे. इसके बाद देखो, ये तो मतलब थ्योरी पार्ट तो पढ़ लिया, और जो तुम्हारे 2025 में जो क्वेश्चन है उसको लिखता हूं. द प्लांट hormone whose concentration stimulates the cells to grow longer on the site of the shoot which is away light is. हाँ बेटे, 2025 का एमसीक्यू है, मैंने एमसीक्यू को ऑप्शंस नहीं दे रहा. Plant hormone whose concentration stimulates the cells to grow longer on the side of the shoot which is away from the light is ऑक्सीजन. करेक्ट आंसर. ठीक है, बुक में है ना बेटा ऑक्सीजन, ये 2025 में आया. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या ऑक्सीजन है तुम्हारे पास बुक साइंस का. इसमें जो ऑप्शंस दिया, फर्स्ट ऑप्शन साइटोकाइनिन, सेकंड ऑप्शन जिबरेलिन्स, थर्ड ऑप्शन एडिनालिन, फोर्थ ऑप्शन ऑक्सीजन. तो करेक्ट आंसर क्या हुआ ऑक्सीजन. मैं लिख नहीं रहा हूं, बाद में तुम लोग को लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट है 2024 में, ये 2025 में आया. 2024 का जो क्वेश्चन है, डिफरेंट सेट्स में अलग अलग है. ये प्लांट growth inhibitor, a plant growth inhibitor hormone which causes wilting of leaves
called? Abscisic acid. Abscisic acid. स्पेलिंग ठीक से मालूम है ना बेटा? एब्सिसिक एसिड है ना? ओके, देखता हूँ आवाज भी आ रही है कि नहीं। आवाज तो आवाज तो नहीं। तूने उसको ओपन में क्लिक तो नहीं किया था? आवाज आ रही है। आवाज हो रहा है? प्रियांशु आवाज आ रही है तुम्हारे पास? आवाज तो आ रही होगी। अच्छा काव्यांश बता बेटा, फर्स्ट में क्या आंसर आएगा? काव्यांश बताइए, याद भी करना है। न्यूरॉन। सेकंड में क्या आंसर आएगा? ऑक्सीजन। थर्ड में क्या आएगा? Abscisic acid. एब्सिसिक एसिड। स्पेलिंग आता है बेटा एब्सिसिक एसिड का? हाँ, ये तो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, ऑप्शन तो दिया रहेगा, लेकिन तब भी जैसे 1 मार्क्स वाले टाइप का क्वेश्चन होते हैं तो उसमें तुम्हारा फायदा रहेगा। ओके बेटा, वॉइस इज क्लियर? कोई ऑनलाइन में प्रेजेंट हो, वॉइस इज क्लियर और नॉट? एक बार यस नो कुछ लिख दो। अच्छा, क्या नाम है प्रियांशु? आवाज हो रहा है ना जूता में? नहीं होना चाहिए। जब प्रॉपरली बैठोगे तो ऑलरेडी तुम्हारा माइंड उसको मालूम मूव कराने में लगते हैं, तुमसे मिस्टेक भी होगा। फुल कंसंट्रेशन में बैठना। अच्छा ओके बेटा, वॉइस इज ऑल्सो क्लियर एंड बॉडी इज ऑल्सो क्लियर। ओके नाउ, तो फर्स्ट में क्या हुआ? न्यूरॉन्स। दोबारा रिपीट कर देता हूं। सेकेंड में क्या होगा? ऑक्सीन्स। थर्ड में क्या होगा? एब्सिसिक एसिड। जो थर्ड पार्ट में ए प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन which causes wilting of leaves is called first option auxin, second option cytokinin, third option abscisic acid, fourth option gibberellins। तो आंसर आएगा एब्सिसिक एसिड। ओके ओके, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ, ये वाला 2023 का। ड्यूरिंग vigorous exercise of
occurrence of cramps in the outer muscles of an athlete. सर ये टोटल 80 का है मार्क्स नहीं लिखना है, तुम्हें जस्ट इज ड्यू टू सर टोटल भी करते हैं is due to the conversion of सालाने को बुला लेना पाइरुवेट टू पाइरुवेट को किस में चेंज किया जाता है? ओके हाँ, कब इस बैठो रोहित मालूम बेटा पाइरुवेट टू बुक है तुम्हारे पास, देखो जो फ्लो चार्ट दिया है ना रेस्पिरेशंस वाला, उसमें देखो दिया है पाइरुवेट टू वन। हाँ पाइरुवेट टू लैक्टिक एसिड, पाइरुवेट टू लैक्टिक एसिड बेटा। पाइरुवेट टू लैक्टिक एसिड। ओके, तो बार बार रिवीजन करते जाएंगे तो याद होते जाएगा। ओके विवेक, खड़े हो जाओ। विवेक बताओ यहाँ पे क्या आएगा? न्यूरॉन्स। यहाँ पे क्या आएगा? ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शंस नहीं दिया करेंगे तभी तो ठीक से ध्यान रख पाओगे। एब्सिसिक एसिड, इसमें क्या आएगा? लैक्टिक एसिड। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें क्या होगा, जो जैसी टाइम में आओगे उसी टाइम में पूछेंगे और बार बार बोलेंगे, बोर्ड को नहीं हटाएंगे बोर्ड से। मैं दूसरा बोर्ड लगा दूंगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा इसमें 4 ऑप्शंस दिया हुआ था, 5 क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा इसमें ध्यान रखो, दिया गया था कि ड्यूरिंग vigorous exercise the occurrence of cramps in outer muscles of an athlete is due to the conversion of pyruvate to, first option था glucose, second option ethanol, third option lactic acid, fourth option lactose. That was the lactic acid is the correct answer. Okay, next is iodine. संजय को बोला, अच्छा ठीक हो तो मैथ्स कर। Iodine is necessary, अच्छा छोटे उसका तो मैं कर रहे हैं, उसको बोला तो वो नीचे बैठ। Iodine is necessary for the synthesis of which hormone? ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं। Iodine is necessary for the synthesis of which hormone?
Iodine is necessary for the synthesis of which hormone? Which hormone बेटा? थायरोक्सिन. एक बार तुम लोग से ही पूछ लेंगे, है ना? जैसे ही उन स्कूल से आएगा फिर हम पूछेंगे. तो इसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का रखेंगे. तो फर्स्ट में क्या ऑप्शन क्या आएगा बेटा? फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में. अच्छा एक बार कोशिश कर लेना, बाकी का बुक से ढूंढ लेना, ठीक है? और मैं तब तक लिखते जा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 6. अच्छा ये वाला बोर्ड में नहीं है लेकिन एनसीटी एग्जाम्पलर का है, ठीक है? नेक्स्ट. Any change in the environment to which an organism responds is called. हाँ बताओ इसका आंसर क्या होगा? स्टिमुलस. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन रेस्पॉन्स, सेकंड ऑप्शन स्टिमुलस, थर्ड ऑप्शन स्टॉपिज्म, फोर्थ ऑप्शन दैट इज टोनिसिटी, दैट इज स्टिमुलस. ओके, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7. हाँ ऐसे बात नहीं करते. The shape of gut cells changes due to change in the desk. हाँ बेटा ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं. चेंज इन द डेस्क. कोई पहले सोच लो क्या क्या हो सकता है. हाँ बेटा बताइए. वाटर, ठीक है, चेंज इन वाटर. हाँ वाटर का क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर. ओके, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है. द शेप ऑफ गट सेल चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द फर्स्ट ऑप्शन प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल, टेम्परेचर ऑफ सेल्स, अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल्स, position of nucleus in the cell, the amount of water in the cells, amount of water in the cells. Okay, ठीक है. ये सारे एनसीटी एग्जाम्पलर का है. एनसीटी एग्जाम्पलर, एनसीटी एग्जाम्पलर से बेटा. अच्छा क्या करूं सर? नीचे बैठो. ऊपर जाओ. involuntary actions in the body are controlled by, involuntary actions in the body are controlled by,
फर्स्ट ऑप्शन है मेडुला इन फोर ब्रेन, सेकेंड ऑप्शन है मेडुला इन मिड ब्रेन, मेडुला इन हिंड ब्रेन, मेडुला इन स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला इन हिंड ब्रेन, मेडुला इन हिंड ब्रेन। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is not an involuntary action? इसमें तो ऑप्शन देना ही पड़ेगा ना। वॉमिटिंग, सलाइवेशन। देखो प्रियांशु, तुम्हारी तरफ से सबसे ज्यादा आवाज की आ रहा है कि तुम ठीक से बैठ नहीं पा रहे, और यही तुम्हारा कमी है फुल मार्क्स मिलने से। ओके, which of the following is not an involuntary action? इसमें से कौन इनवॉलंटरी एक्शन नहीं है? डी ऑप्शन, चीविंग। ओके, सलाइवा सीक्रेट होना। ओके, तुम नहीं बोलोगे तब भी सीक्रेट हो जाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन हो गया डी। और क्वेश्चन नंबर 10, 10 क्वेश्चन होने के बाद एक बार बोर्ड पे तुम लोग को बुलाएंगे। posture and balance of the body controlled by, इसमें जो ऑप्शन है सेरिबेलम, सेकेंड ऑप्शन मेडुला, थर्ड ऑप्शन पोन्स, फोर्थ ऑप्शन सेरिबेलम। ऑप्शन डी सेरिबेलम। ओके, तो सारे ऑप्शंस हो गया। अभी कोई आके लिखोगे ना इसको। तो पहला ऑप्शन जो है एक बार चेक कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन रोहित, फर्स्ट ऑप्शन क्या बेटा, इसमें क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स में। नहीं बोल पाया। ओके, एक मिनट। काव्यांश, फर्स्ट में क्या होगा बेटा? न्यूरॉन। सेकंड में क्या होगा? थर्ड में क्या होगा? एब्सिसिक एसिड। फोर्थ में क्या होगा? लैक्टिक एसिड। फिफ्थ में क्या होगा? थायरोक्सिन हार्मोन। सिक्स्थ में क्या होगा? सेवेंथ में क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, नहीं तो अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सेल, कोई बोलो, है ना। नाइन्थ का क्या होगा बेटा? नो, नाइन्थ जी। और 10th में क्या होगा? सेरिबेलम, है ना। ओके, बैठो। तुम्हें भी याद हो गया सर? ओके, गुड। तो इस तरीके से हम लोग के सारे मतलब याद हो जाएंगे, एक साथ देख लेंगे, है ना। दो दो बार करके 20-30 ऐसा क्वेश्चन होगा, बार बार देखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट बोर्ड लगा देते हैं। नाइन, 10, 11। Spinal cord originates from 10th class first board,
कॉर्ड ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, कहां से ऑरिजिनेट्स होता है स्पाइनल कॉर्ड? अच्छा, चार ऑप्शन गिवन है, सेरिब्रम, सेकेंड ऑप्शन मेडुला, थर्ड ऑप्शन पोन्स, फोर्थ ऑप्शन सेरिब्रम, पोन्स स्पाइनल कॉर्ड, पोन्स चेक करो एक मिनट, ये एनसीटी एग्जाम्पलर में फर्स्ट ऑप्शन सेरिब्रम, सेकेंड ऑप्शन मेडुला, थर्ड ऑप्शन पोन्स, फोर्थ ऑप्शन सेरिबेलम, लास्ट पार्ट जो है सर मेडुला सेरिबेलम, सेरिबेलम डायग्राम देख लो, ठीक है। सर ये पूरा ये स्पाइनल कॉर्ड ही है ये? नीचे जो आउटर वो जा रहा है, ये वाला वहां से तो स्पाइनल कॉर्ड बनेगा, ये दैट विल बी सेरिबेलम। एक मिनट रुको, नो 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 नो, मेडुला ऑब्लोंगेटा वही था, एक मिनट, स्पाइनल कॉर्ड नॉट सेरिबेलम होगा, इट विल मेडुला, सर मेडुला ही बोला, हाँ दैट विल बी मेडुला, मेडुला होगा बेटा, मेडुला ही बोला। मेडुला, दैट विल मेडुला बेटा, मेडुला, पॉन्स फिर ऊपर आ गया। मेडुला साफ कर देता हूँ, मेडुला। अच्छा, 12 का ऑप्शंस भी देता हूँ, सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर, इसमें तो देना ही पड़ेगा ना, एड्रेनालिन, हाँ ठीक ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड, बी जो है टेस्टोस्टेरोन, बेटा मिसमैच कौन है? ये इसका ऑप्शन है एड्रेनालिन, नॉट पिट्यूटरी ग्लैंड, बोला गलत है, बाकी सब सही है। ओके, ये भी एनसीटी एग्जाम्पलर का टिकट है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन,
neuron, conversion electrical signal transmitted from in a neuron, conversion of electrical signal is transmitted from first option dendrite end of one neuron to axonal end of another neuron. मैं लिख देता हूँ because इसका dendritic end of one neuron, axonal end of B part, axon to cell body, same neuron, cell body, axon to cell body to axonal end. B, ध्यान सो कितना आवाज है और one neuron माइंड का कॉन्सेप्ट नहीं है and अच्छा इसमें क्या आएगा बेटा फाइल करो पहले जो है कन्वर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है कन्वर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम dendritic end of one neuron to axonal end of another neuron. तो dendritic end और axonal end वहाँ पे तो केमिकल सिग्नल की बात है in a neuron conversion of electrical signals transmitted from conversion हुआ कैसे ट्रांसमिट axon to cell body of same neuron, cell body to axonal end of the same, that is same neuron, axonal end of one neuron to dendritic end of another neuron. See me? Cell body to axonal end of same neuron. See option? Okay. और इसमें थोड़ी सी क्वेश्चंस में जैसे दिया गया हाँ बोल सकते हैं न्यूरॉन कन्वर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम तो
जाएगा सेल बॉडी टू एक्सोनल एंड ऑफ द सेल बॉडी से एक्सोनल एंड तक जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। ओके सर हाँ सर एक डाउट था बोलो। सर प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फ्यूजन होता है या फिर ये बडिंग होता है किस प्लाज्मोडियम 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 में तो बेटा वो होता है मल्टीपल फिजन। सर फिर इसमें ये बोलो बोलो क्या बोलो? सर ईस्ट में क्या होता है बॉडिंग इसमें बॉडिंग होती है, ओके चेन बॉडिंग होती है। तो मतलब अभी और जो हाइड्रा में लैटरल बॉड होता है, हाइड्रा में लैटरल बॉडिंग होता है, साइड से बॉड होता है। ईस्ट में चेन बॉडिंग होती है। प्लाज्मोडियम में ऑलवेज ध्यान रखना, प्लाज्मोडियम में क्या होता है मल्टीपल फिजन। प्लाज्मोडियम जो एम होता है वहां से ध्यान रखना मल्टीपल फिजन, ओके। और ईस्ट में ध्यान रखना चेन बॉडिंग, चेन बॉडिंग। हाइड्रा में तो ये वो जो डी को ऐसा कर ले बॉडिंग हो जाएगा। हाइड्रा डी है ना, उसको ऐसा करते हैं, डी को बी कर ले बॉडी, याद हो जाएंगे। मतलब जल्दी जल्दी याद करना ना, एग्जाम हॉल में कुछ मिस्टेक हो तो भूल जाते हैं। प्लाज्मोडियम में एम में ये करना, प्लाज्मोडियम का एम फॉर मल्टीपल फिजन, ओके। बाइनरी फिजन अमीबा, ओके। लेशमेनिया में क्या होता है बाइनरी फिजन जो हॉरिजॉन्टल लाइंस में, ठीक है। अच्छा ओके गुड। यहाँ पे और एक क्वेश्चन दे देता हूं, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज क्या मतलब बेटा साइनप्स, जाइनस, जो जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनप्स, ओके। तो ये सारे हो गया। इसमें अभी कुछ जगह दिखाई दे रहा है जहां पे हम लोग और क्वेश्चन लिख सकते हैं, दिखाई तो दे रहा है बेटा। हाँ बेटा, कोई बच्चे का डाउट है तो उसमें फोन नंबर एक लिखा होगा, तो उस फोन नंबर पे सेंड कर दीजिए। अच्छा 15, यहाँ पे 15 क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, 15 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसी का, इस चैप्टर का ना। क्या होगा बेटा? अच्छा असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन मैं लास्ट में दे दूं, ठीक है बेटा? जाओ जाओ, ठीक है, ओके। और उसमें आधार कार्ड लेना है, आधार कार्ड पैसा भी जाएगा, जो ये मेटालिक होगा उसमें वाट होगा, उसमें वाट्स होगा, उसमें यस सर। in a neuron in a neuron conversion of electrical signal to a chemical signal occurs at or in first option cell body, second option axonal end, third option हाँ dendritic
आज मैंने सोचा तुम लोग को याद ही करा देता हूँ ना चैप्टर डेंड्राइटिक एंड और डी में एक्सोन। क्या है बेटा इसका आंसर? इन ए न्यूरॉन कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ए केमिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में चेंज हुआ। कहाँ पे होता है? ऑप्शन का है सर सी क्या बोला एक बार? इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल अच्छा, कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल। किस इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में साइलेंट भी होगा ना? यस सर। तो साइनप्स कहाँ पे होते हैं? सो साइलेंट तो डेंड्राइट के बाद जो मतलब वो न्यूरॉन से बाहर होते हैं। तो क्या लिखेंगे? आराम आराम से, जैसी मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है? पहले पढ़े समझे, नहीं तो इसी करके आंसर करके आ जाओ। ओके, पहले एक बार सुन लो। इन ए न्यूरॉन conversion of electrical signal to a chemical signal occurs at or in cell body, axonal end, dendritic end, axon। ठीक है, पहले पढ़ लो बुक से, उसके बाद फिर आंसर्स करो। ठीक है, एक बार तो गलत हो रहा था क्वेश्चन, फिर दूसरा आंसर आ रहा है। ठीक है, ठीक ठीक से कर। अब लॉक कर दिया। अच्छा ठीक है, किसको कहाँ लॉक किया? बी ऑप्शन लॉक कर। बी ऑप्शन को लॉक कर दिया भी? अच्छा ठीक है, बी ऑप्शन को लॉक कर दिया। ठीक है, अच्छा ओके। तो एक्सोन का एंड में जो मतलब एक्सोन से तो क्या रहा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसके एंड में जाके होगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, है ना? तो वाला क्या होता है? केमिकल वाला होता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है केमिकल जो सिग्नल में चेंज वहां पे होगा, और डेंड्राइटिक एंड में क्या होगा? वहां पे केमिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल में चेंज हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल चलते चला जाएगा। ओके ठीक है, ओके। अच्छा, तो एक बार और एक बार सही है बी ऑप्शन। तुमने पहले तो शुरू कर दिया जो सेकंड गलत होगा, उससे पढ़ने में तो तुम्हारा अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक के आंसर्स। ओके, अब एक बार सुने 1 से 15 तक। अच्छा, तो अमन खड़े हो जाए, बोलिए क्वेश्चन नंबर 1 का क्या फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा? क्वेश्चन नंबर 1, न्यूरॉन in an animal's nervous system is composed of specialized cells called neuron। इधर देख के, okay? Plant hormone whose concentration stimulates the cell to grow longer on the side of the shoot which is away from light is oxygen। A plant growth inhibitor hormone which causes wilting of leaves is called abscisic acid। Okay, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। क्वेश्चन पढ़े, हार्मोन का पूछा, तुरंत आंसर नहीं। ड्यूरिंग विगोरस एक्सरसाइज, अच्छा ओके, तो बैठो। हाँ बेटा बोलो। ड्यूरिंग विगोरस एक्सरसाइज द occurrence of cramps in outer muscles of an athlete is due to conversion of pyruvate to मसल से नहीं, पायरुवेट से किस में चेंज होते हैं? तो लैक्टिक एसिड। Lactic acid, better। Next, iodine is necessary for the synthesis of which hormone? Thyroxine hormone, better। Next, any change in the environment to which an organism respond is called stimulus। Next, the shape of gut cell changes due to change in the concentration of water। not the amount of water in the cell or concentration of water in the cell। So good। Which of the following is not an involuntary action? Vomiting, salivation, heartbeat and chewing।
जब वॉलेंट्री एक्शन बोल दो कि इनवॉलेंट्री एक्शन बोल दो। सर इनवॉलेंटरी जो कि हम चाहे तो वो कंट्रोल नहीं कर which of the following is an involuntary action, मतलब जो हम लोग चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, और वॉलेंट्री एक्शन सकते जो कि अपने आप ही हो जाता है ना। ये तो सारे वॉलेंट्री है, ये वाला इनवॉलेंट्री है ना। बट नेक्स्ट, posture and balance of the body is controlled by सर cerebellum. cerebellum. Next, तुम बताओ, in a neuron conversion of electrical signal to a chemical signal occurs at or in axonal end. Spinal cord originates from, रोहित यहाँ पे लिखा था एम से कुछ लिखा था, मेडुला, वो कौन सा वाला पेज खोला तुमने? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, देखो मेडुला लिखा है, वो जो नीचे की तरफ जा रहा है ना, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। Select the mismatched pair. एडिनालिन हार्मोन क्या होता है? ये एडिनालिन कहाँ से सीक्रेट होते हैं? एडिनल ग्लैंड। ओके ठीक है, बैठो। नेक्स्ट, इन ए न्यूरॉन कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, ऑप्शंस दिए। इन ए न्यूरॉन कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कन्वर्शन हुआ वो ट्रांसमिटेड फ्रॉम, हाँ यहाँ पे ज्यादातर ये होगा एक्सोन, सॉरी सेल बॉडी टू एक्सोनल एंड ऑफ द सेम न्यूरॉन। यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, ठीक है बेटा। बात करो, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। ओके ओके बैठो, अभी कुछ क्वेश्चन सभी से अलग अलग पूछते हैं। प्रियांशु खरे, प्रियांशु से अभी क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो ब्रेन का मतलब डायग्राम आया बनाने के लिए, और कभी कभार डायग्राम नहीं आता, लेवलिंग के लिए दे देते हैं। ओके बेटा, तो क्या क्या लेवलिंग होता है बेटा? क्रेनियम, मेडुला, क्या के कौन सा? क्रेनियम, क्रेनियम, मेडुला, पोन्स, सेरेब्रम, सेरेबेलम, और उसके बाद फोरब्रेन। अच्छा ओके, और उसके बाद बताओ, जो न्यूरॉन कितने टाइप का है तुम्हारे बुक के हिसाब से? सर न्यूरॉन तो होते बहुत टाइप के, हमारे बुक से या फिर दो ही न्यूरॉन दिए। क्या क्या दिया? सर एक दिया है गस्टरी, तीन न्यूरॉन है। तीन न्यूरॉन है, तीन न्यूरॉन है। एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर रहा। हाँ, तीन न्यूरॉन है सर, सर डेली न्यूरॉन, सर मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स एक्शन? सर रिफ्लेक्स एक्शन डेफिनेशन आ गया तो? सर सडन चेंज इन द एनवायरनमेंट। सडन चेंज इन द एनवायरनमेंट, वो कभी रिफ्लेक्स एक्शन होता है? तुम बताओ रिफ्लेक्स एक्शन। Sir, a sudden or quick action to the stimulus. सडन And quick action to a stimulus. क्विक एक्शन टू स्टिमुलस। अच्छा, तो रिफ्लेक्स एक्शन टॉपिक को रीड करो, बैठो। पढ़ लो। इसके बाद बेटा इसमें बड़े क्वेश्चंस भी अभी बताएंगे। अच्छा, सडन अनकॉन्शियस इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। ओके, अच्छा हो गया। रिफ्लेक्स के सब तुम लोग पढ़ लिया था। अच्छा, इसके बाद बड़े मतलब 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को भी अभी पूछते हैं, ठीक ठीक से आंसर करिएगा।
व्हाट आर प्लांट हार्मोन? प्लांट हार्मोन क्या है? व्हाट आर प्लांट हार्मोन? क्वेश्चन नहीं व्हाट आर मतलब डेफिनेशन लिखना. व्हाट आर प्लांट हार्मोन? बोलो. So hormone produced by the plants for the survival of their life in human plant. हाँ, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना. तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट टू कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज प्लांट हार्मोन. ओके बेटर. ये बहुत पुराना क्वेश्चन है. तो उसमें दिया था ग्रोथ ऑफ स्टेम. कौन ग्रोथ ऑफ स्टेम? कौन सा प्लांट हार्मोन? चेक करो बुक में क्या दिया. जिबरेलिन्स. चेक करो ग्रोथ ऑफ स्टेम दिया कहीं. प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन साइटोकाइनिन. इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ इलोंगेशन ऑफ सेल्स ऑक्सिन्स. चेक करो ये सब वर्ड दिया है कि नहीं. चेक करो. ग्रोथ ऑफ स्टेम दिया बुक में. तो जिबरेलिन्स plant hormone are gibberellin which are like auxin help in growth of stem. लाइक ऑक्सिन है. ठीक है. तो सर auxin लिखने के मार्क्स नहीं आए. ऑक्सिन्स के लिए ऐसे देखो इलोंगेशन ऑफ सेल्स कहीं दिया बेटे. चेक करो इलोंगेशन ऑफ सेल्स. जी ऊपर दिया है जिबरेलिन के ऊपर. क्या दिया बताओ. So उसके ऊपर दिया है. बुक निकालो चेक करो. इलोंगेशन ऑफ सेल्स. इलोंगेशन ऑफ सेल्स वर्ड मिल गया एनसीईआरटी में. क्यों उसका बुक है? तुम्हारा बुक का है नहीं. तुम्हारा बुक का है नहीं. उसे बुक दे दो एक बेंच में. हाँ एक कोई बात नहीं सभी को मिल जाएगा. और उस मिलने के बहाने में तुम लोग थोड़ा रीड भी कर लोगे. ज्यादा जल्दी ढूंढना भी जरूरी है लेकिन बुक में कहाँ है बताना. इलोंगेशन ऑफ सेल देखो वर्ड है नहीं. सेल टू ग्रो लॉन्गर दिया है. हाँ ग्रो सेल टू ग्रो लॉन्गर दैट इज इलोंगेशन ऑफ सेल दैट इज ऑक्सिन. ओके ग्रोथ ऑफ स्टेम में जिबरेलिन्स लिखना. ठीक है बेटा. ओके सिट डाउन. ये 2019 का बहुत पुराना क्वेश्चन है. सर ग्रो लॉन्गर के साथ दे रखा है साइट ऑफ शूट बेटर अवे फ्रॉम लाइट. वो तो दूसरा पार्ट है. साथ में दे रखा है. दूसरा जो पार्ट है name the parts of the neuron where information is acquired. Information is acquired. Dendrites. Impulse must be converted into chemical signal from onward transmission. कब होता है बेटा? सुन लो. पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन पूछ रहा है. पहले ठीक से सुन के क्वेश्चन बता. नेम द पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन where impulse must be converted into a chemical signal for onward transmission. Nerve ending. Axonal end of the axon. Okay. Nerve ending बोला तो end of the axon. कोई ठीक है. अच्छा एक एक करके आराम आराम से आंसर्स करो. ओके अच्छा हाँ तुम बताओ. नेम द सेंसरी रिसेप्टर. नेम द सेंसरी रिसेप्टर फाउंड इन द नोज एंड ऑन द टंग. सर एक तो olfactory indicator वो रिसेप्टर और gustatory receptor. Olfactory receptor and gustatory receptor. Okay, but give one example of chemotropism. Pollen tube towards ovule, है ना? Growth of pollen tube towards ovule. ठीक है? Okay, good. हाँ नेक्स्ट तुम बताओ बेटा. Which mechanism control timing and amount of hormone released? Which mechanism
control timing and amount of hormone released. हाँ बेटा चैट बॉक्स में भी लिख दीजिए, जो लिखना चाहते हो चैट बॉक्स में लिखो. Which mechanism control timing and amount of hormone released? Okay, sit down. एक बार बुक से ढूंढना है किस किस बच्चे को मिल गया, लोग हाथ उठाओ. तुम्हें मिल गया क्या बताओ? फीडबैक मैकेनिज्म देखो लिखा होगा बुक में. फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म. ओके बैठो. फीडबैक मैकेनिज्म बुक में मिल गया बेटे सबको? फीडबैक पेज नंबर बता दो. ये कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन का लास्ट पेज. 183. दो मैं मेरे को दो, फिर मैं एडिट करता हूँ. मिला नहीं? यहाँ पे दिया. If it is so important that hormone जो लास्ट पेज में हाँ बेटा इस जगह पे दिया होगा. पीछे चलते इसी जगह पे दिया है. ठीक है इसे तो दिया. इट इज सो इंपॉर्टेंट दैट हार्मोन शुड बी सीक्रेटेड इन प्रेसाइज क्वांटिटीज. वी नीड ए मैकेनिज्म थ्रू व्हिच दिस इज डन. द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म. देखो बुक का लाइन से आया. ओके ठीक है. अच्छा नेक्स्ट तुम बताओ बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2014 का था. हाँ अमन. नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विथ ब्रेन. नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विथ ब्रेन. एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो हार्मोन सीक्रेट करता है. The pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड करेक्ट आंसर. बैठो. नेक्स्ट विवेक. Which gland secretes digestive enzyme as well as hormone. एंजाइम भी सीक्रेट करते हैं as well as हार्मोन भी सीक्रेट करते हैं. कौन? पैंक्रियाटिक ग्लैंड, पैंक्रियास. ठीक है बैठो. नेक्स्ट तुम बताओ बेटा. नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विथ किडनी. Kidney? Yes. नो Gland. ध्यान से याद है. नेम द ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विथ किडनीज. Adrenal gland. एडिनल ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड. Kidney को But- बोल क्यों नहीं पा रहे. नेक्स्ट कपेंस. Which endocrine gland is present in males but not in females? Testes. Okay, good. Better. अच्छा नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन जो पहले भी हुआ. आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ व्हिच हार्मोन. Thyroid. थायरॉक्सिन हार्मोन. पहले भी हुआ ना थायरॉक्सिन हार्मोन. ठीक है. आयोडीन किसके लिए? थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन में एक आई आता है और आयोडीन ध्यान रख दिया. बैठो. अच्छा क्या क्या हार्मोन का नाम दिया है बताइए बेटा. ध्यान से बुक में क्या क्या हार्मोन का नाम दिया. हार्मोन का दो हार्मोन दिया है. एड्रेनल दिया है. फिर उसके बाद सर टेस्टोस्टेरोन दिया है. और ये ऑस्ट्रोस्टेरोन दिया है.
ओस्टेस्ट तो एस्ट्रोजन। शुरू दिया है अच्छा एक मिनट, मैं पूछ रहा हूँ एक चीज। सर और Which hormone is responsible for changes in females during puberty? तो यही आपने बोला Estrogen. ऑस्ट्रेलिया Okay, better. अच्छा, next. इंसुलिन भी Growth hormone is released by. ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, सर पैनक्रियाटिक ग्लैंड कुछ नहीं होता ना पैनक्रियाटिक ग्लैंड कुछ नहीं होता ना पैंक्रियाटिक ग्लैंड, पैंक्रियास जो है वही है, सर वहां पे जो होता है। सर एमसीक्यू में आया था कि जो इंसुलिन है वो पैनक्रियाटिक ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है या पैनक्रियास से प्रोड्यूस होता है पैंक्रियाटिक ग्लैंड, पैंक्रियास, ज्यादातर बेटर पैंक्रियास होता है, ग्लैंड उसको नहीं सर बोला ऐसा जाता। आता है क्वेश्चन ग्लैंड सिक्रीटेड बाय पैनक्रियास पैनक्रियाटिक इंसुलिन नहीं मतलब ये कह रहा है पैनक्रियाटिक ग्लैंड नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि हार्मोन सिक्रीटेड बाय पैनक्रियास। हाँ, इंसुलिन बेटर। अच्छा, मैं एक चीज बताता हूँ, नेम द हार्मोन व्हिच रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी so as to provide the best balance for the growth. Thyroxine hormone. Okay, better. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब सेरिब्रम और सेरिबेलम में दो डिफरेंस बोलेगा तो क्या क्या लिखोगे? टू डिफरेंस बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। सेरिब्रम एंड सेरिबेलम में टू डिफरेंस बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। डिफरेंस पेपर कॉपी में बना लो सभी टेबुलर फॉर्म में। चलो बना, फिर हम सुन लेंगे। सेरिब्रम कौन सा पार्ट में आता है? फोर ब्रेन में, हिंड ब्रेन में, किस में और मिड ब्रेन में? सेरिब्रम फोर ब्रेन में, और सेरिबेलम क्या होता है? हिंड ब्रेन। दूसरा डिफरेंस क्या लिखोगे? देखो धीरे धीरे उसे बता रहे, तुम लोग कॉपी में लिखो, जैसे एक बच्चे बताएगा, सभी नहीं बताएगा, है ना? हाँ बेटा बताइए। सेरिब्रम क्या होता है? लार्ज रीजन होती है ना, ब्रेन का लार्ज रीजन होती है, लेकिन सेरिबेलम जो होता है स्मॉल रीजन होता है। ये दोनों पार्ट लिख दिया बस, ठीक है। थोड़ा मतलब फंक्शन लिखना चाहते तो तीसरे पॉइंट में जाएगा, ठीक है। ओके, बैठो। सर अगर पिंक डायग्राम आता है तो उसमें सेरिब्रो फ्रंट मेंशन करना जरूरी है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जरूर इसके आंसर्स लिखिएगा। ओके, क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लिख लीजिए। अच्छा, पहले डिफरेंस लिख रहे हो, पहले डिफरेंस को लिखो। मैं बोर्ड में क्वेश्चंस लिख देता हूँ, सभी के लिए आसान रहेगा। मैं क्वेश्चन को बोर्ड में लिखता हूँ, थोड़ी देर में आज चेक करते हैं। क्वेश्चन को लिख देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूं बेटा, तो बुक में जहां से आंसर करने का है उससे करोगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, अभी कहां तक बात है? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 कर दो, 16 करते हैं। हाउ डज द प्लांट detect
touch and how do the leaves So how does the plant detect touch and how do the leaves move in response? ये भी बोर्ड में क्वेश्चन आया तो ये तुम्हारा 2 मार्क्स नहीं तो 3 मार्क्स में आएगा ओके इसका आंसर्स लिखना है How does the plant detect the touch and how do the leaves move in response? How does the plant detect the touch and उसका मूवमेंट में leaves का मूवमेंट हो रहा है Do the leaves move in response? Okay. ये वाला कहाँ पे लिखा है बेटा टच वाला सर स्विंग भी वाले में लिखा है How does the plants detect the touch? क्या लिखा है उसके बारे में उसके बारे में लिखा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल और सिग्नल वाटर मॉलिक्यूल के मूवमेंट की वजह से प्लांट को मूवमेंट होता है अच्छा ठीक है उसे लिख के दिखाना लैंग्वेज कौन सा लिखा है डिफरेंस शरीर ऊपर है अच्छा जा ठीक है इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो Okay, growth hormone, correct answer. कोई आंसर्स लिखे बट ग्रोथ हार्मोन तो लिखे नहीं वो पहले वाला था वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड का था अच्छा हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट द टच एंड हाउ डू द लीव्स मूव इन रिस्पॉन्स तो इसका सुन ले बुक में लाइंस को मैच कर ले प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स to detect touch and to convey the information from cell to cell in spite of having specialized protein found in specialized tissue for it है ना लिखा है ना बुक में पूरा चीज लिखना पड़ेगा सर ये लिखा है instead of the specialized protein found in animal muscle cells हाँ ठीक है तो plant use electrical chemical means to detect touch and to convey the information from cell to cell in spite of having any specialized protein. Okay? इसमें कहा है plant cell change their shape by changing the amount of water in एक मिनट बेटा रुको किस पार्ट का आंसर कर रहे फर्स्ट पार्ट का आंसर फर्स्ट पार्ट टच वाला ओके ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ सेकंड पार्ट का आंसर वाटर कंसंट्रेशन वाला बुक में मिल गया प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू डिटेक्ट द टच एंड टू कन्वे द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल मिला बेटा मिल गया ये होगा फर्स्ट पार्ट का आंसर सेकंड पार्ट में हाउ डू द लीव्स मूव इन रिस्पॉन्स तो लीव जो है कैसे मूव करते हैं इसके रिस्पॉन्स उसके लिए वाटर कंसंट्रेशन वाला अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इन देखो ये जो है ना रॉन्गली लिख रहे हो पहला 2 पार्ट ये वाला अलग अलग आंसर लिखो एक साथ मत लिखो 2 अलग अलग पार्ट है ना इसीलिए बोल cells of leaves change their shape by changing the amount of water in them resulting in swelling and shrinking making them to response swelling देखो shrinking बुक में लिखा है तुमने लिखा था बेटा swelling shrinking क्यों नहीं लिखा प्रियांशु तुमने लिखे थे तो देखो जहां मिस्टेक हुआ तो पहली बात है प्लांट्स यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू डिटेक्ट द टच एंड कन्वे द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल
इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग एनी स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, ठीक है। सेकेंड का आंसर होगा द सेल्स ऑफ लीव्स चेंज देयर शेप। बेटा उसके बुक में अंडरलाइन कर दे बेटा, रोहित के बुक में यही बोला लाइक, इसका आंसर कहाँ दिया? मिल गया बेटा? अच्छा, तुम्हारे बुक में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वर्ड दिया है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये वाला आंसर अच्छे से पता चल गया, ठीक है, गुड। अच्छा, श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग वर्ड लिखना है इस पार्ट में, श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग, ओके। तो देखो उसमें बुक में, बिकॉज तुम लोग बुक को ठीक से पढ़ नहीं पा रहे थे ना, इसीलिए हमने बताया कि देखो क्वेश्चन आंसर्स बोलेंगे तो बुक भी याद होते चला जाएगा। भूख लग रहा है बेटा? खाना खा के आए थे? हाँ, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है। देख एक्चुअली क्या होगा, मैं तुम लोग को बता देता हूँ। पहले ये जो दिमाग में जाएगा ना, थोड़ा सा वर्ड जो मतलब पढ़ा नहीं तो क्या हुआ, अभी पढ़ लेंगे ना, पहली बात। दूसरी बात है टाइम बहुत है, ऐसे नहीं कि कम टाइम। पहले दिन सुनो, समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन इतना पता चलेगा कि ऑक्सीजन बोल के कुछ था, सर कुछ बोल रहा था, साइनेप्स होता है, क्या होता है, जो ऑप्शन आएगा, टिक लगाना है, वही वाला सर ने जो उस दिन डिस्कस वही बोला, टिक लगा था। आज जैसा फिल इन द ब्लैंक्स दिया तो डिफिकल्ट है, ऑप्शन हटा दिया, लेकिन एग्जाम में थोड़ी फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, तो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन तो तुम ऐसे ही टिक लगा दोगे। तो जो मतलब साइंस में क्या होता है, देखो एक तो जिन लोग के अच्छे नंबर आ रहे हैं दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। जो नॉर्मली देखते हो कि ठीक है मेरे को 40 मतलब 35 अराउंड जो भी आ जाए बस काम हो जाएगा, ऐसा सोचते हो, तो उसके लिए देखो एमसीक्यू को हर चैप्टर का करो। मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जितने एमसीक्यू है, एनसीईआरटी बुक में जितने एमसीक्यू है, वो 3-4 एमसीक्यू है। और 2025, 23, 24 है ना, 22, 19 उसमें भी एक दो एमसीक्यू था, तो उसको भी देख लो, ठीक है बेटा। और इस टाइम में कुछ क्वेश्चंस कर लो, मतलब एक क्वेश्चन उठ के आ जाता है, ऐसे तो नहीं बोला गया कि तुम्हारा लाख एकदम बहुत खराब है। एक क्वेश्चन आ गया तो हाउ डज प्लांट डिटेक्ट टच, अच्छा डिटेक्ट टच भूल गया, किसी ने इलेक्ट्रिसिटी लिख के आ गया, तो कुछ तो दे सकता है कि इलेक्ट्रिकल की जगह इलेक्ट्रिसिटी लिख दे, इलेक्ट्रिकल केमिकल लिख दिया, कुछ तो नंबर देगा, थोड़ी काट देगा। फिर इसमें मान लो लिख दिया स्वेलिंग, सिंकिंग और वाटर अमाउंट, ऐसे छोटे छोटे करके लिख दिया, वाटर अमाउंट चेंज और सिंकिंग स्वेलिंग, बस काम हो जाएगा, ठीक है। मेन कीवर्ड्स को लिखना जरूरी होती है, ओके। नेक्स्ट टाइम के क्वेश्चन दे रहा हूं, नेम द सिस्टम व्हिच फैसिलिटेट्स, एक मिनट लिख देता हूं, क्वेश्चन लिख देना जरूरी। 70 name the system which facilitates communications between इसका आंसर मत बताना, जो जिसे पूछोगे वो बताए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम and the other parts of the body। इसका आंसर कवेंस क्या होगा, इसका आंसर बेटा कवेंस, व्हाट विल बी द आंसर? हाँ चैट बॉक्स में लिखिए बेटा, चैट बॉक्स में लिखिए, कोई लिख रहे हो चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ बेटा चैट बॉक्स में लिखिए, नेम द सिस्टम व्हिच फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन
between central nervous system and the parts of the body if you are in 10th class है ना? अच्छा ओके बैठे who can give the answer हाथ उठाओ तुम हाँ बताओ तुम बोलो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तुम्हारा सेम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बुक में दिया देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नॉट हाइपोथैलेमस बेटा हाइपोथैलेमस नहीं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बुक है बुक के पर लिखा है बेटा कहाँ पे लिखा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो बुक में दिया है वो बुक को दिखा देता अंडरलाइन करो फिर दिखा हाँ बेटा देखो इस जगह पे ये डायग्राम दिया फर्स्ट सेकेंड में communication between the central nervous system and the other parts of the body is facilitated by peripheral nervous system consisting of cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord. ठीक है मिल गया yes or no अच्छा ओके गुड सही कोई बच्चा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है आंसर भी लिख रहा है ओके 18 हाँ आंसर्स लिख दिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन mention two types of nerves आज तो बहुत फायदा वाला बेटा याद हो गया क्वेश्चन nerves two types of nerves PNS peripheral nervous system PNS हाँ बेटा Right class. No. खाना खाने भाई के पास अच्छा टाइप्स ऑफ नर्व्स पीएनएस नर्व्स पीएनएस बोलो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम consist of उसको बोला था पहले करना नहीं consist of along with their organ of origin इधर देखिए इधर बेटा इस क्वेश्चन का जो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और मेंशन टू टाइप्स ऑफ नर्व्स पीएनएस कंसिस्ट ऑफ अलोंग विथ देयर ऑर्गन ऑफ ओरिजिन बोलना चाहते भी मैं बोली cranial nerves from brain or spinal nerves from spinal cord. ठीक करेक्ट आंसर तुम यही बोल रहे हो cranial nerves from brain and spinal nerves from spinal cord ओके बहुत बढ़िया उसको मम्मी ने मेरे घर बुलाया था जगह बता दीजिए
अच्छा एक बार रिविजन हो जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, यहाँ तक 18 हो गया। अच्छा 20 तक करना था। हाँ नाइन्थ क्लास लिख के बात बोल, लिख के बात लिख के बात करो। चेकिंग चेकिंग अच्छा नाइन्थ क्लास बोल बोल के नहीं, लिख के बात करो, चैटिंग। अच्छा pathway in which impulses travel during the reflex action is called बोल दिया तो जाने ना पता। दूसरे का name the part of neuron through which information travel इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अच्छा ओके ठीक है, अभी एक एक क्वेश्चन कभी इससे पूछ लेता हूँ। शिवांश सर, अच्छा शिवांश बाद में आए थे ना, तुम पहले आए थे। हाँ बताइए इसमें क्या आएगा? रिफ्लेक्स आर्क। ओके सिट डाउन। शिवान नेक्स्ट। हाँ रिफ्लेक्स आर्क हो गया, गुड। हाँ दिस वन इज रिफ्लेक्ट करेक्ट आंसर। ऑनलाइन में कोई लड़का करेक्ट आंसर कर रहा है। हाँ नेम द पार्ट ऑफ न्यूरॉन थ्रू व्हिच इंफॉर्मेशन ट्रैवल एज एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। चला बताओ। ये दो बार आया बोर्ड में। हाँ बेटा बोलो। एक्शन मेन पार्ट्स में एक्शन है, क्लियर। ये वाला क्या होगा? एक्शन। ये वाला क्या होगा? रिफ्लेक्शन। हाँ पार्ट ऑफ
पार्ट ऑफ न्यूरॉन देता है। अरे तुम पढ़ नहीं पाए, वो काफी देर हो गया ना, तो 2 घंटे से ज्यादा पढ़ रहे हो तो भूल जा रहे हो सर। कोई बात नहीं, अभी एक बार बैठो, एक बार हम पॉइंट्स काउंट करते हैं। जिन लोग पहले से ही पढ़ रहे थे सुन लो, तो तुम लोग का भी घर जाने के अच्छा था ना, बिकॉज तुम लोग आए थे 12-1 बजे करीब। ओके, तो फर्स्ट ग्रुप का तो छुट्टी करता हूँ, और जिन लोग अभी आए मैं उन लोग को और एक बार क्वेश्चंस को पूछेंगे। पूछने के बाद फिर तुम लोगों को काम देंगे, इस चैप्टर से करीब 50 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा है। और तुम लोग के लिए घर के लिए काम है, कॉपी में बिना देखे इस चैप्टर से करीब 50 पॉइंट्स लिख के ले आना। 50 पॉइंट्स, जो जो मेन इंफॉर्मेशन होगा इस पेज वाइज, आगे पीछे भी चल जाएगा, ठीक है, याद करने के बाद। तो ठीक है, चलो अच्छा ओके। तो और एक बार मैं शुरू कर रहा हूँ, और एक बार पूछता हूँ। हाँ, आराम से, बाद में। ओके ऋषभ, इसमें क्या आएगा बेटा? रिसेप्टर्स। कभी क्या आएगा? जल्दी चलो। अच्छा, इसमें नाम लिख दे, नाम लिख, अटेंडेंस उधर उधर जो नाम पेन अपना अपने इधर से नहीं। कभी इस बताइए, शिवांश इसका सर फर्स्ट वन न्यूरॉन। न्यूरॉन, और नहीं तो नर्व सेल्स, न्यूरॉन नहीं तो नर्व सेल्स। ओके, दैट हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 तुम बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ऑक्सीन। ओके, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑक्सीन। ऋषभ, क्वेश्चन नंबर 3 जाइए। एब्सिसिक एसिड, चलिए एब्सिसिक एसिड क्लियर। ओके, बैठो। कभी नेक्स्ट 4th वन ड्यूरिंग, हाँ, लैक्टिक एसिड। ओके, करेक्ट आंसर। शिवांश, रोहित, तुम भी जो काफी देर। अच्छा, ये हो गया लैक्टिक एसिड, थायरॉक्सिन। ओके, गुड। थायरॉक्सिन और और 6 में एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट टू व्हिच एन ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टिमुलाई, और नहीं तो स्टिमुलस। ओके ओके, बस बना ले और उसको पढ़ोगे, ठीक है, कोई डरने वाला बात नहीं, काफी टाइम है, कोई टेंशन नहीं। Any change in the environment to which an organism response is called stimulus. होते उसमें लिख देता हूँ। एक बार चेक कर लो जो है, फटाफट कभी देख लो जल्दी। अभी एक दिन मैं देखिए चैप्टर 1 2 साइंस में उसे पढ़ के कौन सा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अच्छा, आयोडीन इज नेसेसरी हो गया। एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट टू व्हिच एन ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टिमुलस। नेक्स्ट
The shape of gut cell changes due to change in the amount of water present in the cell. Good. Involuntary action in the body are controlled by Sir, bonds or Hindu. मेडुला अच्छा इसके लिए ऑप्शंस देना पड़ेगा। ऑप्शंस में देखो बुक में क्या क्या हो सकता है, ऑप्शंस दे दो। अच्छा इसके लिए ऑप्शंस दे देता हूं, नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा लोग ठीक से बोल नहीं पाओगे। ऑप्शंस दे दो। Sir, midbrain. Midbrain and hindbrain. अच्छा गुड। तुम लोग के लिए ऑप्शंस में देता हूँ, रुको क्वेश्चन आया था कब आया था देख लेते हैं। ओके हाँ, involuntary action in the body are controlled by first option। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। मेडुला इन फोरब्रेन, मेडुला इन मिडब्रेन, मेडुला इन हिंडब्रेन, मेडुला इन स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला इन हिंडब्रेन। ओके ठीक है, क्लियर ये बोला हो गया। नेक्स्ट, which of the following is not an involuntary action? chewing हाँ chewing है ना, गुड। अच्छा ओके, नेक्स्ट जो है बेटा हार्टबीट हो गया। इन ए न्यूरॉन कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ए केमिकल सिग्नल। अच्छा इसमें और कुछ क्वेश्चन है, ये इजी लेवल भी दिखा दे। क्वेश्चन नंबर 11, स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम। हाँ तुम बताओ, वो डायग्राम से बता। Spinal cord originates from देखो बुक में देख के बताओ, बोलो। स्पाइनल कॉर्ड खुद ही तो नहीं होता, चेक करो बुक से बताओ। ऑप्शंस दे दो, ऑप्शंस दे दो। Hindbrain. ऑप्शंस दे दो। स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन सेरिब्रम, सेकेंड ऑप्शन मेडुला, थर्ड ऑप्शन पोन्स, फोर्थ ऑप्शन सेरिबेलम। Cerebral. ठीक से फर्स्ट ऑप्शन सेरिब्रम, सेकेंड ऑप्शन मेडुला। डायग्राम देखो ना, डायग्राम से पता चल जा रहा है कि नहीं? मेडुला, डायग्राम से पता नहीं चल रहा है, मेडुला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अंडरलाइन करके रखे, भूल गए थे। सिलेक्ट द मिसमैच पेयर। हाँ बताइए। एड्रेनालिन, पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा ये ठीक है। अच्छा ओके। 13, in a neuron conversion of electrical signal is transmitted from that बोलो। नो ऑप्शंस। इसमें थोड़ा सा ज्यादा तक इंपॉर्टेंट ये लग रहा है, सेल बॉडी टू एक्सोनल एंड ऑफ द सेम न्यूरॉन। सेल बॉडी से वहां तक जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है। Cell body. ओके ठीक है। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। अभी फिर मैं न्यू क्वेश्चंस लिख के दूंगा, तुम लोग तब तक
इसके आंसर्स बुक से हेल्प लेना तो बुक से हेल्प लेके मेरे को लिख के दो। हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट टच एंड हाउ डू द लीव्स मूव इन रिस्पॉन्स? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक से इसके आंसर्स करो। पहले बिना बुक देख के, उसके बाद नहीं आता तो बुक देखने के बाद इसका लाइन कहाँ पे है, कैसे, जस्ट ट्राई करो। मैं तब तक और कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, और कुछ क्वेश्चन। जिसका जो एग्जाम है उसी को पढ़ो, और मतलब तुम्हारा एग्जाम नहीं है तो जो मैं बता रहा हूँ उसको देखो। So मैं जो क्वेश्चन दिखा दे रहा इस क्वेश्चन को Yes. आंसर से लिखो। अच्छा, अभी जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप को मैंने लिख दिया डिफरेंस में, तुम लोग को अभी इसमें क्या क्या वर्ड आएगा लिखना है। जैसे इट इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट, रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन जिस रास्ता में होता है उसको होता है रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, है ना। एंड जो वॉकिंग इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। इट इज ऑलवेज ऑफ डैश काइंड, डैश काइंड। और बोलते हैं इट वेरीज, ये तो वेरीज टाइप का होता है। वॉकिंग का नेचर
इट इज सिमिलर काइंड फॉर रिफ्लेक्स एक्शन ही क्विक होगा और सेम इसमें द स्पीड ऑफ सिमिलर काइंड और स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज ऑलवेज Quick response होता है, spontaneous. हाँ स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज ऑलवेज Spontaneous. क्विक भी लिख सकते हो Quick. और द स्पीड ऑफ वॉकिंग नहीं एक्चुअली देखो इट इज ऑलवेज सेम स्पीड ऑलवेज सेम सारे रिफ्लेक्स एक्शन का ये तो क्विक भी लिखो लेकिन स्पीड ऑफ वॉकिंग डिपेंड नहीं तो वेरीज स्पीड ऑफ वॉकिंग वेरीज करते हैं लेकिन स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन ऑलवेज रिमेन सेम ठीक है बेटा 22 सर क्वेश्चन नोट करना है हाँ सर 1 से करना है ना हाँ वन से एक्चुअली आज रिकॉर्ड भी हो रहा है यूट्यूब में सेरिब्रम the largest part. आजा आजा cranial nerves origin brain spinal nerves origin for spinal cord peripheral nervous system so chemical signal response this इस आंसर को मॉडिफाई करो बुक लैंग्वेज को देखो दो तीन पॉइंट छूटा है स्वेलिंग श्रिंकिंग वाला छूट गया सर कॉसेस की बात करें थर्ड क्वेश्चन a plant growth inhibitor hormone which causes wilting 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 of leaves is called क्या है बेटा बस सर नाम क्या है इसका ऐसे क्या होता है FCC एसिड FCC एसिड है तो रिवीजन बेटा देखो रिवीजन ना बोर्ड में लिख के कराएंगे तो एक साथ सारे देखेंगे तो याद हो जाएगा जैसे यहाँ पे दिया सेरिब्रम इज ए पार्ट ऑफ व्हिच ब्रेन सेरिब्रम कौन सा ब्रेन का पार्ट है फोर ब्रेन का मिड ब्रेन का हिंड ब्रेन का सेरिब्रम कौन सा ब्रेन का पार्ट है पेट तो कनेक्ट करता है फोर ब्रेन और सेरिबेलम हिंड ब्रेन इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन और इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू सेरिब्रम इसका रोल क्या होता है बेटा थिंकिंग इनवॉलेंट्री समटाइम वॉलेंट्री एक्शंस को मेंटेन करना ओके और इसका क्या होता है पोस्चर एंड बैलेंस बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर ओके लाइक दैट ओके यस सर
ये 10th क्लास का कौन सा बोर्ड हो गया? थर्ड बोर्ड हो गया, फर्स्ट सेकेंड। लिख दे। ठीक। मैंने लिख दिया तो शायद सेम वाली वाला। अच्छा, ओके सही, अभी सही। ये वाला हटा देता हूँ। एक बार फटाफट चेक कर लेता हूँ थोड़ी सी। तो समीर, Yes. मतलब तुम लिख नहीं पा रहे तो वो स्कूल से आया थक गया तो देखो इधर। In animals, nervous system is composed of specialized cells called neurons. The plant hormone whose concentration stimulates the cells to grow longer on the side of the shoot, which is away from the light is Auxin. good. A plant growth inhibitor hormone which causes wilting of leaves is called Abscisic acid. abscisic acid. During vigorous exercise, the occurrence of cramps in the outer muscles of an athlete is due to the conversion of pyruvate to muscles में L for lactic acid. इसे muscles जैसी आएगा ना उसका L ध्यान रखना, L for lactic acid. Iodine is necessary for the synthesis of which hormone? Thyroid. Thyroid. Any change in the environment to which an organism responds is called stimulus. Shape of the gut cell changes due to change in the Changing the amount of water. water in the cells. Involuntary actions in the body is controlled by Brain. 9. involuntary action. Spinal. Involuntary actions. Involuntary action. Involuntary action. Involuntary action. Medulla in hindbrain. Involuntary action. बुक में देखो लिखा medulla in hindbrain. Midbrain and hindbrain. Yes sir, midbrain. Midbrain and hindbrain ये तो book में लिखा है। क्या लिखा था एक बार चेक करो। Midbrain and hindbrain है। Most of the Many of these involuntary actions are controlled by the midbrain and hindbrain. जो आपने ऑप्शन दिए उसके हिसाब से midbrain and hindbrain। हाँ। अच्छा, which of the following? Chewing. Posture and balance of the body is controlled by Posture and balance. Cerebellum. cerebellum है। cerebellum, हाँ? Med. ठीक है, अभी भी डिफरेंस में भी था। Second baby। हाँ बेटा, उसके बाद हाँ बेटा, जो प्लान से वो केमिकल लिख रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल बुक में जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल नहीं इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल, बुक में इलेक्ट्रिकल केमिकल कंट्रोल आएगा। अच्छा समीर, स्पाइनल कॉर्ड ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, डायग्राम में दिया ना मेडुला से हो रहा है। सिलेक्ट द मिसमैच पेयर। Yes sir, बताता हूँ सर. ये वाला तो ठीक है, अभी ठीक है। Sir, A. In a neuron, conversion of electrical signal is transmitted from Dendrite. नहीं इधर ऑप्शंस दिए, अच्छा. Option. cell body to axonal end of the same neuron, axonal end of one neuron to dendrite सब क्वेश्चन end of हो गया। Junction between the two neuron is Junction between the two neurons. एस से क्या बोलते हैं? Synapse. सिमंस क्यों बोल रहे थे? सिमंस के जैसे लाइक कोई ड्यूटी दिया गया उसे बोल लेता है। समीर एक मिनट पीछे चला जाओ, अभी थोड़ा अच्छे से अभी सबसे ही पूछा जाएगा ये वाला कोड द आंसर्स के लिए। ऋषभ में बताइए, हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट टच? हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट टच? ये नहीं आता. बुक में दिया देखो, बुक में बुक दिखा देता हूँ। ओके हाँ बेटा टाइम हो गया, मैं देखा नहीं, बैठो। ओके ठीक है, तुम लोग इधर आके बैठ जाओ।
हाँ बेटा टाइम हो गया, वो टाइम क्लास का तुम लोग ऊपर जाओ, ऊपर जाके 100 पॉइंट्स लिखो बेटा उसमें से। हाँ 50 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स